So here we are with another discussion of mechanical properties of fluids. Let's start with pressure. Average pressure is defined as the normal force acting per unit area. Pressure is force upon area. Limit delta area tends to 0. Delta F by delta A is scalar quantity. Variation of pressure with depth. तो आप जानते हो किसी भी फ्लूइड्स में अगर जितना डेप्थ बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा. प्रेशर इन डिफरेंस P2 माइनस P1, P2 नीचे का P1 ऊपर का इक्वल्स टू रो जी एच. हाइट के साथ प्रोपोर्शनल, डेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल. इफ पॉइंट 1 इज एट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड देन P2 इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच. P माइनस PA इक्वल टू रो जी एच इक्वल गॉज प्रेशर, जहाँ पे PA सरफेस का है, एटमॉस्फेरिक. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर, मर्क्यूरी बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर. यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस, P gas equals to PA plus rho GH. Pascal's law. Whenever an external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all directions. Device based on Pascal's law. Hydraulic lift and hydraulic brakes. Hydraulic lift and hydraulic brakes are acting on this law. Archimedes principle. Loss of weight of a body submerged partially or completely in a fluid is equal to weight of the fluid displaced. मतलब आप किसी बॉडी को अगर किसी फ्लूइड में डिस्प्लेस करोगे तो वो जितना सबमर्ज करोगे तो जो वो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस वाटर का वेट हम लेंगे तो वो उस जो हमने बॉडी को सबमर्ज किया था उसके इक्वल आ जाएगा. Rho B is lesser than rho A liquids body. Rho B body का rho is greater than body will sink. ये तो इक्वल होगा तो फ्लोट विथ फुली सबमर्ज, तो डूबता रह के फ्लो करेगा, वो फ्लोट करेगा. लॉ ऑफ फ्लोटेशन. फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट VS by B equal to rho B by rho L. फ्लोटिंग का रूल है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड फ्लूइड. बायो एंड फोर्स इज इक्वल टू द weight of the fluid displaced. Buoyant force depends on G effective. Buoyant force acts on opposite of G effective. Streamline flow. The flow is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. The path taken by fluid particle under steady flow called streamline. स्टेडी फ्लो के अंडर जो पाथ लेता है उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्ट्रीमलाइन फ्लो. मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट इक्वल ऑफ द मास लिक्विड फॉलोइंग इन. A1 B1 इक्वल टू A2 B2. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. ये मास कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. इन बार्नौली प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी per unit volume, P kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains constant. P equal to half of rho V square plus rho G H equal to constant. Rho V square plus rho G H equal to constant. ये अच्छा वाला इक्वेशन है, बार्नौलीज इक्वेशन, आप याद रख सकते हो. Phenomenons associated with heart attack, Magnus effect and aerofoil. Lift of aircraft. Venturimeter. It is a device used to measure the flow speed of incompressible fluid. V1 equals to under root of 2 rho mgh by rho capital A by small a square. कैपिटल A स्मॉल a क्या है? कैपिटल A लार्ज एरिया, स्मॉल a स्मॉल मिडिल बीच का स्मॉल एरिया, माइनस होल स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 by 2. And then liquid density A, speed of efflux, Torricelli law.
speed of flux A1 V1 equal to A2 V2. V2 is lesser than V1. V1 equal to under root 2gh plus 2 into P minus A PA by rho. When P is greater than PA and 2gh may be ignored. On the other hand, tank is open to the atmosphere, then P equal to PA, V1 equal to under root 2gh. Viscosity. Viscosity is a property of fluid due to which it opposes relative motion between its different layers in steady flow called viscosity. Tangential force between the layer. F equal to minus eta A dV by dr. Eta equals to coefficient of viscosity and eta equals to shearing stress by shearing strain. Eta coefficient of viscosity है equal to minus F force equals to minus eta A dV by dr. That's quite important. Eta equals to shearing stress by shear strain rate. ऐसा यूनिट पॉइस बोलते हैं. और स्टोक्स लॉ कहता है द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस ए इक्वल्स टू F minus 6 pi eta AV terminal velocity. Terminal velocity का फॉर्मूला इम्पोर्टेंट. टर्मिनल वेलोसिटी कहता है V terminal equal to 2/9 r square rho minus sigma into g by eta. Density of sphere material, density of fluid, rho variation of velocity with time. Surface tension. Surface, it is the thickness of few molecular size. Surface tension, the property of liquid by which the free surface of liquid at rest tends to have minimum surface area, called surface tension. Surface tension can be defined as the source per unit length on imaginary line drawn at the surface of liquid. Surface equal to F by L. Surface tension of a liquid falls with temperature. Surface energy. Molecules on the surface of liquid have some extra potential energy in comparison to molecules in the interior. A liquid thus tends to have minimum surface area. एवरी लिक्विड का टेंडेंसी होता है मिनिमम सरफेस एरिया करने का, क्योंकि उसके सरफेस एनर्जी के लिए. Surface energy and surface tension. Work done in increasing surface area. W equal to S into delta A effective. Thin film with bubble have two surfaces, so 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. वाटर ड्रॉप सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है इसको. देन at point of contact, angle between tangent planes drawn at the surface of liquid at surface of solid inside liquid called angle of contact. Theta is lesser than 90 degrees. Surface will be concave. Liquid stick to solid and rise in capillary. If theta is greater than 90 degrees, surface will be convex. Liquid does not stick to solid and fall in capillary. If theta equal to 90 degree, surface will be plane. Liquid does not stick to solid, neither rise nor fall in capillary. Water forms droplets over a lotus leaf while spreads over a clean plastic plate. Drops and bubbles. Pressure inside is greater than pressure outside for liquid gas interface. The convex side has a lower pressure than on concave side. Liquid drop and air bubble in water have one surface, so delta A effective equal to delta A NGO. P initial minus P naught equal to 2s by r. ड्रॉप के लिए कैविटी के लिए भी 2s by r, बट बबल के लिए 2 सरफेस एरिया तो 4s by r. कैपिलरी, when a capillary tube is dipped
in any liquid, then liquid either rise or fall inside the capillary tube. Height of liquid column rise or fall inside capillary tube is a 2s cos theta by a rho g. Important formula, h is inversely proportional to a मतलब उसका रेडियस कितना होगा. A tube insufficient length, liquid will rise to top of capillary, increase radius of curvature and stay there, never comes out from the fountain. This is consequence of pressure difference across curved liquid air interface, as well known effect that water rises up in a narrow tube despite of gravity. इसके साथ फ्लूइड्स का रिवीजन हमारा ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में.